और उसने पूछा कि आपको किसी से प्यार हो गया है? You look, you are in love. And I say, yes, but I cannot tell you where my beloved lives. तो सिस्टर ने बोला, हाँ मुझे प्यार हो गया है, लेकिन आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो कहाँ रहता है। So many things like that during the journey. ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हुई इस जर्नी में। There have been challenges. There have been many lessons. There have been learnings. बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए इतने समय में सिस्टर को। And I remember in Madhuban, Daddy Yankee especially used to give me a lot of love, maybe because I was very young, being in foreign countries. क्योंकि सिस्टर बहुत यंग थे उस समय, तो जब सिस्टर मधुबन आते थे तो जानकी दादी का विशेष बहुत प्यार मिलता था उनको, क्योंकि वो यंग थे और फॉरेन की सेवा, मतलब फॉरेन कंट्री से बाहर की विदेशी थे और वहां पे सेवा कर रहे थे, यंग थे, इसलिए दादी जानकी का विशेष प्यार दीदी को मिलता था। One day in Indraprastha, in front of the Tower of Peace, silently after saying many beautiful things, she looked at me for many minutes, giving drishti, and then she said, "Your name now is Shanti." तो एक दिन दादी जानकी ने इंद्रप्रस्थ जो कि पांडव भवन में है, वहां पर उसके सामने खड़े होके दीदी को दृष्टि दी, काफी देर तक दृष्टि दी, और फिर दादी जानकी ने नाम रखा सिस्टर का कि आज से आप सिस्टर शांति हो, आपका नाम आज से शांति हो। And said, never respond to the old name. Never respond back to the old name. That this is new birth. दादी ने कहा, ये नया जन्म है और ये नया नाम है, पुराने नाम को भूल जाओ और उस नाम को पे कभी वापस कोई बुलाए तो जवाब मत देना, ये नया नाम पे ही जवाब देना। And I remember at my work saying, now my name is different. फिर जब वो वापस गए और तो अपने जहाँ पे काम करते थे वहां जाके सबको बताया, मेरा नाम बदल गया है, अभी मेरा नाम शांति है। So, I need courage because everything here in foreign countries looks strange for someone to change her name. थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि वहां पे नाम चेंज करना या कुछ भी चेंज करना थोड़ा सा लोग अजीब लगता है, तो थोड़ा सा उसके लिए हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि नाम बदला था। नाम आपकी आइडेंटिटी होती है, तो थोड़ा सा हिम्मत के साथ आगे बढ़े तो फिर वो नाम भी एक्सेप्ट हो गया। But I have the faith that this name has been given by God, and I have to honor the trust He has in me. उन्होंने इस बात को सोचा कि ये नाम मुझे खुद भगवान ने दिया है, क्योंकि मुझे ये नाम भगवान ने दिया है तो मुझे इस नाम के साथ ही चलना है, और इस नाम की I'm sorry sister, what did you say last? I have to honor the name He has given to me. और उनको इस जो नाम भगवान ने खुद दिया है उस नाम की रिस्पेक्ट रखनी है और इस नाम को भी रिस्पेक्ट करना है। So many beautiful memories with Daddy. She was in Spain, sometimes in the center, and I was. I remember one day, it was in my beginning, she came to the talk and my parents came.
स्पेन में भी दादी गए और उनके साथ की बहुत सुंदर यादगार है। दादी के साथ के कुछ बहुत अच्छे समय बिताया दीदी ने, और एक बार उन्होंने उनके पेरेंट्स से भी बात करी, माता पिता से भी बात करी दादी ने। I was 20 or 21. My mother said to Daddy, "Give me back my daughter." जब दादी ने उनके मम्मी पापा से बात करी तो दीदी की मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो। And so Daddy took my mother's face and she did like this to my mother, like this. And she said to her, "Your daughter will do service to the whole world. She will be in good hands." दादी ने उनकी लौकिक माता जी को प्यार करते हुए और चेहरे को थोड़ा सा छुआ और फिर बोला कि आपकी बेटी को बहुत सर्विस करनी है और वो एक सेफ हैंड्स में है, सुरक्षित हाथों में है। And next day, father and mother were in the Murli class in front of Daddy. और दूसरे दिन मम्मी पापा मुरली क्लास अटेंड करने के लिए आ गए। सुबह दादी क्लास ले रही थी और वो मुरली अटेंड करने के लिए आ गए। For many years, I remember going to Madhuban, and Daddy will always remember and give me a gift for them. और फिर दादी जब भी दीदी मुरली के लिए मधुबन जाएंगे तो दादी कुछ ना कुछ उनको सौगात देंगे। दीदी को मुरली के लिए नहीं, मधुबन जाएंगे तो दादी कुछ ना कुछ सौगात देते थे दीदी को। For many years, it has been like her direct sustenance from Daddy in many ways. It was like she was preparing the soul to become more mature. दादी दीदी को तैयार कर रहे थे सर्विस के लिए। And I'm so sorry, there was someone in the room. I couldn't pay attention to what you said. She was, I knew with the blessings of Daddy, she was preparing me to become more mature. दादी की ब्लेसिंग से दीदी और मैच्योर हो रहे थे, सेवा के लिए परिपक्व हो रहे थे, और सब दादी इस तरह से दादी उनको तैयार कर रहे थे। But for me, she was the instrument of telling me, God trusts you. और दीदी के लिए दादी इंस्ट्रूमेंट थे, माध्यम थे ये बताने के लिए कि भगवान आप पे भरोसा करता है। I didn't know it was going to be like a support for big sins for the future, big obstacles. And that sustenance and that awareness of Baba, my support, will be for future sins and afterwards as obstacles. पहले तो दीदी ने इस चीज के लिए ना बोला, लेकिन फिर वो बाबा का सपोर्ट था कि जो आने वाले, वो तैयार कर रहे थे आने वाले टाइम के लिए, और जितने भी ऑब्स्टिकल्स आने थे उसके लिए एक रेडी कर रहे थे, और प्रिपरेशन थी फ्यूचर की, आगे मतलब भविष्य की तैयारी जैसे कर रहे थे। And I see in this Brahmin life, you grow up and fly with the good experiences that Baba and this beautiful life give you, but also you can grow with difficulties. हम ब्राह्मण जीवन में एक तो अनुभव से आगे बढ़ते हैं, और कभी-कभी जब कुछ परीक्षा आती है तब भी हम उससे भी आगे बढ़ते हैं। Because you become more strong inside. क्योंकि परीक्षा आपको आगे बढ़ाती है और आप और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। So now, after all these years, 29,
I think, yes. November will be 29 years. Now I can say really Daddy is not longer there, and also many years that she has not become like that close contact. But now Baba is my real support. आज 29 साल बीत चुके हैं। नवंबर में 29 साल पूरे हो जाएंगे। दादी नहीं है, तो बाबा आज मेन सपोर्ट है। बाबा ही असली सपोर्ट है। Now, since 10 years, I think, more or less, I'm not working. I surrender in the center because I'm in the whole region where we have 5 centers. 10 साल पहले दीदी सरेंडर हुए और पूरे रीजन में 5 सेंटर्स हैं, तो दीदी ने सर्विस छोड़ दी और फुल टाइम बाबा की सेवा में आ गए। But I never have the consciousness that I in charge of anything. Very clear. Baba has made me an instrument. He's in charge. दीदी को कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इंचार्ज हैं या वो कर रहे हैं। उनको हमेशा लगा बाबा ने उनको इंचार्ज बना के रखा है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बाबा उनसे करा रहा है। बाबा ही मेन इंचार्ज है। And I have seen in the last years how he has shown a beautiful way of being the father and mother and also the real friend. और बाबा ने दीदी को अनुभव कराया है कि वो एक पिता है, माता है और एक सच्चे दोस्त हैं। Because when things go well, you feel Baba is there, but when things become a little bit like this, and he gives you and gives you and gives you, then you see he won't leave you. जब सब कुछ सारी परिस्थितियां अच्छी होती हैं तो हमको लगता है बाबा हमारे साथ हैं, लेकिन जब कुछ परिस्थिति ऊपर नीचे होती है तब हम अनुभव करते हैं कि बाबा कैसे हमारी मदद करता है। बाबा देता है, देता है, देता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। So his love is really, how he says, what transform us. तो बाबा का ये प्यार ही है जो हमको पूरी तरह से बदल देता है। And sometimes the soul has to pass through different experiences to become more real, even purer. और कभी-कभी हम अलग-अलग तरह के अनुभवों से गुजरते हैं जिससे कि हम और पवित्र बन सकें और प्योर बन सकें। Because I think in this life is very important we are true. और इस जीवन में बहुत जरूरी है कि हम सच्चे बने। True from inside. अंदर की सच्चाई। And it will come outside. अंदर की सच्चाई ही बाहर चेहरे पर आती है, बाहर दिखती है। And then Baba can use you as he really wants. और फिर बाबा आपको जैसे चाहे वैसे आपको यूज करता है। So I don't know if you have any questions. Otherwise, I continue. Sister, we have half an hour, so you may continue. Please share some more experiences with Dadi, with Brahmin family. If you have some experiences with London family, whatever, some seniors of Yagya, whatever experience, we have half an hour, no problem. Okay, because in case
someone of you have any questions, also I can be there. I share experiences anyway, no? Okay. Something that I always feel that Brahmin family is helping us to become more pure in all sense, because once everything comes through the Brahmin family nowadays. Once you have your accounts clear with the Loki family, even though you are nicely with them, service with them, then it's the Brahmin family where, a lot of learning. We serve together and we develop all the virtues with them. So I think is for me the real means to make me perfect. एक बार जब हमारा लौकिक परिवार से या लौकिक दुनिया से जब हमारा अकाउंट क्लियर हो जाता है, तो यह ब्राह्मण फैमिली, हमारा ब्राह्मण परिवार हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है, हमें परफेक्ट होने में मदद करता है, बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, क्योंकि हम साथ में सर्विस करते हैं, साथ में रहते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे बढ़ने को मिलता है उनके साथ. Since I came to my Brahmin life, I have been in 5 centers, and I was born physically in Seville, where I am now. दीदी का जन्म सिविर, सिविर. दीदी का जन्म सिविर में हुआ था, लेकिन जब से वो बाबा की सेवा में आए, तब से वो 5 अलग-अलग सेंटर पे सेवा दे चुके हैं. Baba sent me to other centers in 5 other places. बाबा ने उनको सेवा के निमित्त बना के 5 अलग-अलग सेंटर्स पे भेजा. I remember I was in Barcelona, the main center, and Daddy sent me to Las Palmas. दीदी बार्सिलोना के एक सेंटर पे थे और दादी ने उनको Las Palmas, Canary Islands. कैनरी आइलैंड्स में लॉस पैल्मस करके कोई जगह है, वहां पे सेवा के लिए भेजा. And I was 27 years old. और तब दीदी की एज 27 साल थी. Daddy could foresee what was going to happen. दादी देख सकते थे कि आगे जाके क्या होने वाला है. दादी भविष्य को देख सकते थे कि आगे जाके क्या होगा. So there was a brother who was in charge, and he was living in his own place, and he lived the center for the sisters, but the center, it was small, and the neighbors were lawyers, and they wanted the center, they wanted the flat. वो जो स्थान था वो एक भाई का था. वो भाई दूसरी जगह पे जाके रहता था, और जो अगल बगल अड़ोस पड़ोस में रहते थे वो सारे लॉयर्स थे, वकील थे, और वो चाहते थे कि वो जो फ्लैट है वो कब्जा कर लें. So they fight for it and they got it. तो उन्होंने कुछ उसके लिए कुछ कानूनी कुछ करा होगा, केस वेस, और वो जीत गए और वो फ्लैट भी उनको मिल गया. So the brother was very disappointed because he loved that center. He found it. Has a little bit lack of faith at that moment. जिस भाई का वो सेंटर था वो थोड़ा सा दिल शिकस्त हो गए, उनको थोड़ा सा निश्चय में कमी हो गई, क्योंकि वो तो सेंटर या जो फ्लैट था वो उनके हाथ से चला गया था. And then drama, benevolent drama, present a big house in the town center, very close to the other one,
but independent. It was a 3-floor house. फिर ड्रामा अनुसार, ड्रामा जो कि कल्याणकारी है, उसके अनुसार एक अलग घर मिला, एक इंडिपेंडेंट घर मिला। ऐसे तो वो फ्लैट था, अभी इंडिपेंडेंट घर मिला जो कि 3 स्टोरी का था, और उस सेंटर जहाँ पे वो पहले वाला फ्लैट था उसके काफी पास में वो नया घर मिला, बाबा का घर मिला। We got that center. फिर वो घर को सेंटर में कन्वर्ट करा और वहाँ पे सेवाएं शुरू हुई। Many souls came through that. बहुत सारी आत्माएं ने वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। Because, you know, Brahma Baba used to have thoughts in Las Palmas, as many Sindhi Bala used to work there, and there are many Sindhi people there. ब्रह्मा बाबा को ऐसे Thoughts in Las Palmas. उनको कुछ ऐसे संकल्प आते थे कि लॉस पैल्मस में बहुत सारे सिंधी रहते हैं, तो वहां पे अगर सेंटर होगा तो वहां पे बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। So big center was a good option. हाँ, तो छोटा फ्लैट था, उसकी जगह पे अभी एक बड़ा सेंटर था जो कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर था। But then there was a big situation in another island. This was, Las Palmas was an island from Canary Islands, and there was a big situation in another island. हाँ, ये बात लॉस पैल्मस की है जो कि कैनरी आइलैंड्स में है, और एक और जगह है वहां पे भी कुछ इसी तरह का था, दूसरी जगह है, उसके बारे में दीदी अभी बताएंगे। It was a sister who seems that was in Brahma Kumaris, but was not anymore. And she did something with a group that reached to the media, like they were going to leave the body or something like that. That make a big upheaval in the whole world, in fact. एक सिस्टर पहले ज्ञान में चलते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा न्यूज जैसा स्प्रेड करा कि वो शरीर छोड़ देंगे इस तरह से, और उसकी वजह से काफी ये बात चर्चा में आई। दूसरी जगह की बात है, ये दूसरी जो जगह है कैनरी आइलैंड से थोड़ा दूर कोई दूसरी जगह होगी, वहां की ये बात है। So I was there, and you know, we have to go to the media, all the newspaper, and present like documents that, you know, we have nothing to do with this lady, because it was many years that she just was in contact, but there was some pictures there in her house. फिर दीदी को मीडिया में जाना पड़ा, लोग ये न्यूज़पेपर्स में जाके बताना पड़ा कि उस बहन से हमको कोई लेना देना नहीं है, और ये जो भी वो बातें कर रही है इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। And I remember Daddy phoning me to the center. और दादी ने तब दीदी को सेंटर पे फोन करा। Everything is fine. Are you okay? दादी ने पूछा सब कुछ ठीक है, तुम सब लोग ठीक हो, आप ठीक हो? I say, yes, Daddy. My brother phoned and he said, please don't kill yourself. हाँ, अपने आप को खत्म नहीं करो। Because it was in the news, no, that these people went were to kill themselves, but then it was not true anyway. तो ये सब न्यूज़पेपर में था कि ये लोग खुद को ही खत्म कर लेते हैं, तो फिर ये खबर गलत थी, और इसलिए दादी का फोन आया था। And I said to Daddy that, and she said, you know, she was giving so much love. Don't worry, Baba is with you. You are protected, and I am with you. तो दादी ने फोन करके बोला, बाबा आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, और आप बाबा की छत्र छाया में हो, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। And I never have not even 1% of fear. और दीदी बोल रहे हैं कि मुझे 1% भी कोई डर नहीं था अंदर से।
I was not used to speak to big people, and you can see me with papers, speaking to the directors of the media and going here and going there. उससे पहले दीदी ने कभी किसी कोई पोजीशन या पोस्ट पे कोई हो उससे बात नहीं करी थी, इतना वो बात नहीं करते थे ऐसे लोगों से, मगर उस समय दीदी ने वो सारे पेपर ले लेके जिसके पास भी जाना था गए, डायरेक्टर्स के पास गए, मीडिया हाउसेस के पास गए और बात को सामने रखा. Baba was with me. दीदी को हर समय ऐसा लगा कि बाबा उनके साथ है. And that just passed, nothing, it was forgotten. And it was like 3 years after that I was working in a football club as a secretary. Football group. Club. You know, like football, where the party is, how do you call, with the team that plays in the field, professional team. Okay. That play football in the team. So I was working in the association of the football club. फिर दीदी ने एक फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ गए, उनके साथ एज अ सेक्रेटरी काम करने लगे. 3 साल के बाद ये जो सब कुछ हुआ, सब कुछ शांति से उसके बाद बीतता गया और फिर 3 साल के बाद दीदी एज अ सेक्रेटरी एक फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ गए. So there were some earthquakes in India at that moment. You remember Gujarat, big earthquakes, and I was going to Madhuban. So because in my work I used to send to the media all the itinerary of the team, of the football team. So I say, you know, these days I will go to India. And my colleagues say, oh, you are going to India, but you know, it's upheaval there. There is earthquake. And I say, yes, but I go to NGO. तो दीदी को मधुबन आना था और वो उस समय की बात है जब इंडिया में वो भूकंप आया था गुजरात में. तो वहां पर दीदी का काम था कि वो फुटबॉल टीम पूरा कहाँ जाएगी, क्या क्या करेगी दिन भर में, वो पूरा भेजना होता था उसका रिकॉर्ड. तो वहां से सबने बोला कि आप वहां जा रहे हो और वहां पे तो भूकंप आया हुआ है, काफी परेशानी है. तो दीदी ने बोला मैं वहां पर एक एनजीओ में जा रही हूँ. एनजीओ. So they say, oh, we have to put this in the newspapers. उन्होंने बोला फिर हमको ये न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा कि आप वहां पर एनजीओ में जा रहे हो और वहां पर ये सिचुएशन है इस वक्त. So the same newspapers that were defaming us 3-4 years ago, now in the first page, just in the front of the newspaper, saying a nurse for the soul going to India. फिर यही ड्रामा थोड़ा सा चेंज हुआ. पहले जो न्यूज़पेपर वाले हमारे बारे में खराब लिख रहे थे, कुछ संस्था के बारे में खराब लिख रहे थे, उन्होंने ही दीदी का फोटो फ्रंट पेज पे डाल के एक अच्छा सा टैगलाइन लिखा कि एक नर्स जो इंडिया सेवा के लिए जा रही है. तो उससे वो and inside in the explanation there was everything about Brahma Kumaris in a very nice way. और उसका जो राइट अप था, वो जो उसके बारे में लिखा गया फोटो के नीचे, वो सब कुछ ब्रह्मा कुमारी क्या करती है क्या नहीं करती है बहुत अच्छी तरीके से नीचे उन्होंने लिख करके न्यूज़पेपर में डाला. And after coming from Madhuban, many radios, TV and newspaper were calling me, come. और मधुबन से आने के बाद इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन वाले कॉल कर रहे थे कि आप आइए, शायद इंटरव्यू लेना होगा. इंटरव्यू लेने के लिए. So it was beautiful to see how, you know, when we are without fear, doing what we have to do, the same media that were defaming us, now they are praising us and
they did so much service. वो मीडिया जिसने एक समय पर कुछ गलत लिखा था, अभी वही सर्विस का माध्यम बने, वही हम ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बहुत कुछ अच्छा न्यूज़पेपर में डालने लगे. So again, I have seen Baba's magic so many times. और ये बाबा का जादू है जो दीदी ने अपने पूरी जीवन में कई बार अनुभव किया. Also, then I had been in another center in Madrid, opening one center in Gibraltar, because Daddy knew I had experience to deal with the Sindhi people there in Las Palmas. She sent me to Gibraltar. Gibraltar is a small colony from England, but in Spain. दीदी स्पेन के मैड्रिड सेंटर पे भी रहे हैं और जिब्राल्टर एक छोटी जगह है जहाँ पे काफी सिंधी रहते हैं, वहाँ पे भी एक सेंटर की स्थापना करी. वहाँ पे भी दादी ने भेजा क्योंकि वहाँ पे बहुत सिंधी रहते थे, तो वहाँ पे भी बाबा का घर. But I didn't know. I just went to the inauguration with Sister Genti in Gibraltar. So it was in the Murli class that she said in front of everyone who went to the inauguration, Daddy said, if Shanti can stay in front of everyone. सिस्टर शांति सिस्टर जयंती के साथ वहाँ पे उस सेंटर के इनॉग्रेशन पे गए थे, तो वहाँ पे दादी ने सबके सामने बोला कि क्या शांति इस सेंटर पे रह सकती है. And I just could say, okay, what to do? और सिस्टर ने बस दादी की बात मानी और बोल दिया, हाँ मैं रहूंगी. And I remember where I took the things, my things, personal things from Las Palmas. I moved and I took all my things. And the first day in the lift to enter the center, I was alone by myself. And one Indian brother, he said, you are going to have very difficult times here, because, you know, still in the memory of the old people is Dadale crash to all, all the daughters or whatever. दीदी ने अपना सामान अपने लिया और जब वो सेंटर ये ब्राजील के सेंटर पे लिफ्ट में जब जा रहे थे, लिफ्ट में जा रहे थे, तो एक इंडियन ब्रदर ने बोला कि सबके माइंड, दिमाग से वो पुरानी मेमोरीज सिंध की निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा. तो आपको एक डिफिकल्ट और बहुत चैलेंजिंग, आपको एक बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम यहाँ पे करना है. But Baba had another plan, and you know, many people came to the center. We did programs in the temple, and that same brother went to Madhuban and became Brahmin. अच्छा, वो जो भाई था जो उनको बता रहा था कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, वो खुद बाद में ब्राह्मण, उनको ज्ञान समझ में आया, वो खुद ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण जीवन उन्होंने अपनाया. और बाबा की मदद थी कि खुद से लोग आते थे और बहुत सारे कहीं पे कुछ प्रोग्राम होता था उसके लिए इनवाइट करते थे, मंदिरों में कुछ होता था उसके लिए इनवाइट करते थे. So again, no, a scene of defamation because of wrong stories, Baba's service, and you know, yes, the being there and showing we are good people and we just want to serve. Everything was dissolved from the minds people. जो भी पुरानी सिंध के लोगों की जो भी पुराने मतलब जो भी पुराना उनको पता था कि ये हुआ था सिंध में, वो हुआ था सिंध में, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ सर्विस के लिए हैं, देने के लिए हैं, हमें हेल्प करने के लिए हैं, तो पुरानी सारी चीजें खत्म हो गई.
So I see how Baba, in different places where the name has been spoiled, he has used instruments to make things right in a beautiful way. तो बाबा ने बहुत ही खूबसूरती से जहाँ जहाँ पे कुछ भी गलत किसी को पता था या कुछ भी गलत कुछ भी लोगों को कुछ गलत समझ में आया था या जहाँ पे भी कहते हैं ना कुछ डिससर्विस हुई थी, वहां में बाबा ने बहुत अच्छे से सब कुछ बना दिया। बाबा ने कुछ ना कुछ किसी को इंस्ट्रूमेंट बना के सब कुछ पॉजिटिव हो गया। And I think the key is to be ready, because sometimes, and the beautiful magic of service is when you are not aware even that God is using you. और सबसे अच्छी बात है कि आपको हमेशा रेडी रहना है। कभी कभी आपको पता भी नहीं होता, लेकिन परमात्मा आपको सर्विस के लिए यूज कर लेता है, तो हमेशा सर्विस के लिए रेडी रहना चाहिए। The instrument just has to be available. इंस्ट्रूमेंट को हमेशा अवेलेबल रहना है। जो भी हम अगर निमित्त है तो हमें बस हमेशा एवर रेडी रहना है। बाबा हमको कभी भी यूज कर सकता है। For the music to play whenever he wants. बाबा को जब भी आपसे कोई सेवा लेनी है, बस हमें रेडी रहना है और वो उसको जो कार्य आपसे कराना होगा वो आपसे करा लेगा। The musician needs to play his flute. The instrument is ready and clean. हम सब एक वाद्य यंत्र की तरह हैं और बाबा हमको यूज करता है। तो जब भी बाबा को हमको यूज करना होगा, वो हमको लेकर के हमसे जो म्यूजिक बजाना है, हमसे जो कार्य कराना है वो करा लेगा। So this is the essence of my stories. I also have been in Madrid, in Barcelona, and now in Seville, where I was born. So it has been like a cycle, 5 places, and I come back to the same place I was born, because now no karmic accounts with relatives or anyone, and now I can be here. तो लाइफ जैसे एक सर्कल थी, जहां पे जन्म हुआ उस स्थान से अलग अलग सेंटर पे गए, सेवा करी और वापस से सबील में है अभी दीदी। और क्योंकि अब कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं है, न लौकिक का कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, तो अभी वापस से बाबा ने दीदी को सबील में रखा है सेवा के लिए। And now I feel it's our role of all of us to be angels, because we need to serve to the whole world, also in a very subtle way. So a lot of purity is needed for that inside. तो अभी का समय देखते हुए हम सबका जो रोल है इस ड्रामा में वो फरिश्तों का होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पूरे विश्व की सेवा करनी है और उसके लिए अंदर बंसा में बहुत पवित्रता चाहिए, प्योरिटी चाहिए। Okay, any questions? Just for 5 minutes. Great. We are receiving powerful, peaceful vibrations from Spain today. Okay, great. All team of Spain is really wonderful. Baba has picked special jam from Spain, and we are good enough fortunate there that we are listening during the week from Spain. Okay, very good. So, sister, let me ask you, before receiving this knowledge, did you believe in God? What? I was Christian religion. Exactly. But did you believe in God? Believe in God, yes. I was believing in God. But always very clear that God was the Father. At that moment, I thought Christ was the Son. But always the thought that he was the Father, God. Okay, but most of the Christians are not believing in God. So what is the exact concept for them?
because maximum Christians are not believing in God. So we can't use the word God with them up to some extent. So why the scenario is like that? Because if we read Bible, then Jesus has said, God is light and I am son of God. But in many countries you can't use the word God and they are Christian. Why is the scenario is like that? Can you please clarify? Yes, here we can use God. In fact, this is a very Christian country. Spain is a very, very Christian country. And because we, Baba's children, use God like a name, and they are very open because they use God also, like Dios. Dios means God. Okay. And only as father, no mother, only as father. So, even, there is only in Christianity, there is only one God. Because Christ always say Father. Yeah. Yeah. So in that way, we try to, like take that, like also Christ was signaling God. And then they are open to it. Okay, great. Thank you. So we have Dr. Jain Bhai, and I would like to request Dr. Jain Bhai to share something. Om Shanti. Om Shanti. We are very happy to see the history, listen the history of revolution by you in all the duties that were given by Baba to you. That is a proud of our sister, Shanti Didi. We are very, very happy to understand your own inner confidence and inner submission to God Father. And that is why you were winning everywhere. And that was the search of Dadi Janki ji or Babas, or it is for us. So all the world will get message that how who surrenders Baba gets Vijay and can be a Vijayanti Mala member. So you are so lucky, and we are also so lucky to get you at this event. We are very, very happy to see and listen Sister Shanti Didi, Shanti Ben. So बहुत बहुत शुक्रिया है आपको. Shukriya, I know. Shukriya, you know. Thank you all. So very nice. Now, as you said, we have now the aim to be Farishta. There also, there are troubles that can come, but Farishta will not have a single moment to see as a struggle. There will be no, karma's stress. So, as you will be willing, you will be winning also the circumstances, whatever comes in the world. And thus, we all will gather together and win this Kal-yugi world, or establish the heaven with you. Okay, thank you very, very much. We are very happy to, again, I will say happy to see you. So we are all happy, all brothers and sisters here are very, very happy to see today from Spain. और शांति बेन, आप तो जैसे जयंती बेन के बहन लगते हो. Exactly. हैं? I was also thinking like that. हाँ, आप जयंती बेन के बहन लगते हो, सिस्टर लगते हो. Sister of Jayanti Ben. Your look is like sister of Jayanti Ben. Your smile is also like that.
Exactly. So you are sister, no? So you are sister of her. Otherwise also, और or you have been adapted every very moment when your mother and father has devoted you to Janki Dadi. Janki Dadi said, my daughters. Now you have to also become sister of Baroda too, and you have to come here. Okay, When- I'm when coming you- here. I come into Baroda. Ah, nice. So we are welcoming all. All will in gallery will say welcome by. Thank you, and thank you, Sister Niti. Thank you, Brother Minesh, and thank you all for the invitation, translation. Beautiful family in front of my eyes. Thank you, And sister. Now, thank you. Now we will meditate for 2 minutes and then we will finish. Okay? Thank you for okay. your time. Thank you for your time. Thank you for sharing wonderful experience. And thank you, Niti Ben. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया. चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं. ओम शांति. ओम शांति. शांति की दो किरणें ले, शांति की दो किरणें ले, सोया संसार जगा दे, जगत जननी ज्योति को तू, जगत जननी ज्योति को तू फिर से जगमगा दे.